कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। इसमें हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इन इंडिया is influenced by the ideology of Mao. It is influenced by the ideology of Mao. It started in India in August, or rather May June 1967 in three villages of West Bengal. Naxalbari, Khuriwari, and Phansi Deva village. Three villages of West Bengal, Darjeeling district. Presently, 9 Indian states are affected by left wing extremism. Nine states are affected, and almost 40,000 full time cadres are associated with left wing extremism, and 9,000 to 10,000 armed cadres उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था गोल्स ऑफ left wing extremism to actualize their vision of a state. With the support of to actualize their vision of a state. With the support of marginalized and dispossessed section of society. Second Administrative Reform Commission का क्या कहना है? Nature of left-wing extremism. Nature is primarily agrarian in India. It is primarily agrarian in India. Factors responsible for left-wing extremism. One, land-related factors. Land-related factors. पहला, failure of land reforms.
ऐसा माना जाता है कि लैंड रिफॉर्म का फेलियर भी एक कारण रहा है इसका, लेकिन मुझे लगता है कि लैंड रिफॉर्म का फेलियर इसका एक बड़ा कारण नहीं हो सकता था। अगर लैंड रिफॉर्म सक्सेसफुल भी होता तो टेम्पोररीली हो सकता है कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इतनी तेजी से नहीं फैलता या इतना वायलेंट नहीं होता। ये टेम्पोररीली हो सकता है, ट्रू, लेकिन मुझे लगता है कि लॉन्ग रन में लैंड रिफॉर्म इसका सोल्यूशन तो नहीं होता। अगर लॉन्ग रन में इसका सोल्यूशन होता तो वेस्ट बंगाल डिक्लेयर्ड 10.5% surplus land and it was able to distribute 9.5% of the surplus land, and West Bengal is still facing left wing extremism. अगर लैंड में सोल्यूशन होता तो फिर ये तो नहीं ही होता, और वेस्ट बंगाल से ज्यादा इफेक्टिवली किसी ने लैंड रिफॉर्म को इंप्लीमेंट नहीं किया था। मतलब आयरन फिस्ट से वेस्ट बंगाल में लैंड रिफॉर्म इंप्लीमेंट करवाया गया था, बट स्टिल यू हैव लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इन वेस्ट बंगाल। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये एक हो सकता है कि थोड़े टाइम के लिए ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को रोक पाता, लेकिन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इवेंचुअली तो होता ही। दूसरा, प्रेजेंस ऑफ स्पेशल लैंड टेन्योर सिस्टम of special land tenure system. Presence of special land tenure system क्या है? Which has been exempted from ceiling laws. Exempted from ceiling laws. कि मान लिया अगर सीलिंग लॉ कहता है कि 5 एकड़ से ज्यादा लैंड आपके पास नहीं हो सकता है, तो स्पेशल लैंड टेन्योर सिस्टम कुछ और प्रोविजन से लैंड देने की कोशिश करता है कि लीज पर लिया जा सकता है लैंड, या कोई भी और प्रोविजन हो सकता है जिससे लैंड का ट्रांसफर कुड बी मेड पॉसिबल। थर्ड, ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू नॉन ट्राइबल्स। ट्राइबल लैंड to non-tribals. दूसरा रीजन, एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स। एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? तो सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने जो जो एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स बताए हैं, मुझे लगता है कि वो बिल्कुल सही है और वो बिल्कुल एप्लीकेबल है। फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर बताया है रैम्पेंट करप्शन। रैम्पेंट करप्शन के पीछे वहां बड़ा कारण इसलिए है कि जैसे इन सब एरियाज में अगर करप्शन बहुत रैम्पेंट होता है तो सिविल सोसाइटी बहुत स्ट्रांग है। जैसे लखनऊ सिटी है, अगर यहां कुछ हुआ तो सिविल सोसाइटी बहुत स्ट्रांग है, मामला तुरंत न्यूज़पेपर में आ जाएगा। लेकिन एक ऐसी जगह पर जहां सिविल सोसाइटी ऑलमोस्ट एब्सेंट है या है ही नहीं सिविल सोसाइटी, उन जगहों पर न्यूज में भी कुछ नहीं आना है। कई जगह ऐसे भी थे कि जब महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तो उसमें एक जॉब कार्ड मिलता है हर रूरल हाउस होल्ड को, और उस जॉब कार्ड को यूज करके आप 100 डेज का वेज एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं अगर कोई भी एडल्ट मेंबर चाहता है उस रूरल हाउस होल्ड का। सो एवरी एडल्ट मेंबर कैन गेट जॉब अपॉर्चुनिटीज और मैनुअल कच्चा वर्क के फील्ड में जॉब अपॉर्चुनिटी उसको मिल सकती है।
बिमल जलान का एक एनजीओ था जिसने उड़ीसा में रिसर्च किया था। तो ये पाया गया कि पूरे विलेज में टोटल नंबर ऑफ हाउस होल्ड इज 31 और टोटल नंबर ऑफ जॉब कार्ड इश्यू हुआ था 125। सोचिए, इसका मतलब कि बाकी जो जॉब कार्ड इश्यू हुआ था वो पैसा साइफोन्ड ऑफ हो जाता था, वो पैसा किसी और के अकाउंट पे चला जाता था। ये सब चीजें वहां क्यों हो रही थी? इसलिए हो रही थी कि कोई चेक नहीं था, और उन जगहों पर ऐसे भी पहुंचना बहुत मुश्किल है। कई सारी ऐसी जगह हैं कि जहां पर पेपर पर रोड बन भी चुका था, उसका पैसा भी जिसको जाना था उसको जा चुका था, लेकिन रोड वहां का भी नहीं बना था, और हर साल रोड की रिपेयरिंग भी हो रही थी। ऐसी ऐसी जगह थी कि 10-10 साल से रोड की रिपेयरिंग चल रही थी, बाद में वहां पता लगाया गया तो पता चला कि रोड भी नहीं बना था। ऐसी भी जगह थी। स्कूल्स में टीचर नहीं आ रहा है, और स्कूल पिछले 5-7 साल 10 साल से चल रहा है, क्योंकि कोई चेक नहीं होता था उन जगहों पर। दूसरा, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आर सेल्डम प्रेजेंट एट देयर प्लेस ऑफ पोस्टिंग्स। ऑफिशियल्स, ये सब ऑब्जर्वेशन है जो ऑन रिकॉर्ड है, मतलब मैं नहीं बोल रहा हूं, ये ऑन रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आर not present at their place of postings. तीसरा एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर, abuse of or rather misuse of powers by government officials. कोई चेक है नहीं, मान लिया जो कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है वो वहां के लोकल पावरफुल आदमी से मिल करके, और ये सब चीजें तो बहुत पॉपुलर पहले होती ही थी कि वहां के पावरफुल आदमी से मिल करके और उस पावरफुल आदमी को जिसको पिटवाना है उसको पिटवा दिया। कोई सिविल सोसाइटी है नहीं, कोई चेक है नहीं, कोई ऐसा भी नहीं है कि अगर आपने ऐसा कर दिया तो आपको कुछ पनिशमेंट मिलने जा रहा है। ये सब प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज थी, लाइवलीहुड रिलेटेड इश्यूज। अब इन सब चीजों पर सीरियसली काम हालांकि हुआ है, ऐसा नहीं है कि इसमें इंप्रूवमेंट नहीं है। जैसे गवर्नमेंट के कुछ एरियाज में प्रोजेक्ट है, वहां पर करप्शन बहुत मुश्किल हो गया है। अब जो लोगों को राशन मिल रहा है पीएम प्राइम मिनिस्टर जन कल्याण योजना में, तो वो राशन में भी क्वालिटी अच्छी है। मतलब जिन लोगों से भी मैंने पूछा है कि क्वालिटी कैसी है, हर कोई ये कहता है कि क्वालिटी अच्छी है। तो कम से कम उस चीज में आजकल हम लोग, वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव चेक है, वहां पर आउट एंड आउट ऐसा नहीं हो रहा है कि करप्शन है। अदरवाइज पहले लैक ऑफ फूड सिक्योरिटी भी था। दूसरा, उनके ट्रेडिशनल स्किल्स के मार्केट इकोनॉमी में कोई कीमत नहीं थी। उनका ट्रेडिशनल स्किल ऐसा नहीं था कि मार्केट में उस चीज को बेचा जा सके। जैसे यूपी में जो बड़ा अच्छा एक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, क्या नाम है, हुनार हाट। फ्लिपकार्ट ने कहा कि 1000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है उस एक प्रोजेक्ट में। 1000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेशन है। अगर 1000 का रेवेन्यू जनरेशन है तो कल को 2000 का भी हो सकता है, अगर आप उस चीज को प्रमोट करेंगे तो। हर डिस्ट्रिक्ट की पिक्यूलियरिटीज को प्रमोट किया है फ्लिपकार्ट ने अपनी वेबसाइट से। तो इस तरीके के इनोवेटिव मेजर्स के साथ हम आ सकते हैं, क्योंकि कई सारे एरियाज में ट्राइबल्स के ऐसे स्किल्स हैं जो अब तक
यूजलेस रेंडर हो गए थे, रेंडर्ड यूजलेस। ट्राइबल एरियाज में तो छोड़ दीजिए, इवन ऐसे एरियाज में आप देखेंगे जैसे मधुबनी पेंटिंग्स है, मधुबनी पेंटिंग्स की एज सच कोई कीमत नहीं है, लेकिन मधुबनी पेंटिंग बनाने वाले लोगों को कभी कोई कीमत नहीं मिल पाती थी। कारण क्या था कि जो मिडिल मैन होता था वो प्रॉफिट उन तक पहुंचने ही नहीं देता था। डायरेक्टली अगर आप मार्केट से कनेक्ट कर देते हैं ऐसे लोगों को जिनके पास स्किल है, तो उनको उनके स्किल की पूरी कीमत मिलेगी। ऐसे अलग अलग एरियाज में आपको हिंदुस्तान में ट्रेडिशनल स्किल्स मिलेगा जिसका बहुत बड़ा मार्केट है, लेकिन लोगों तक वो स्किल नहीं पहुंच पा रहा है। तो कुछ इनोवेटिव मेजर्स लेकर हमको आने पड़ेंगे, यहां पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए। ये हुनर हाट टाइप का स्कीम, प्लस एक्सक्लूजन रिलेटेड इश्यूज। एक्सक्लूजन क्या है? पॉवर्टी और एक्सक्लूजन बड़ा क्लोजली रिलेटेड है। पॉवर्टी और एक्सक्लूजन में बहुत क्लोज रिलेशनशिप आपको देखने को मिलेगा। क्या रिलेशनशिप देखने को मिलेगा? अगर मान लिया कोई पुअर है, उसको स्कूल कॉलेज जाने का मौका नहीं मिला, मार्केट इकोनॉमी को जो स्किल चाहिए वो स्किल भी अक्वायर नहीं कर पाया, तो ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट इकोनॉमी के बेनिफिट से भी वो दूर रहेगा। सो वंस यू आर पुअर, you are likely to be excluded from the benefits of market economy. And once you have been excluded, you are likely to remain poor. एक बार अगर आपको एक्सक्लूड किया जा चुका है, आप मार्केट इकोनॉमी से एक बार एक्सक्लूड हो गए हैं, यू आर लाइकली टू रिमेन पुअर। समझ रहे हैं मेरी बात में क्या बोल रहा हूं? अगर मान लिया कोई गरीब है, स्कूल जाने का मौका नहीं मिला, उसको कॉलेज जाने का मौका नहीं मिला, मार्केट इकोनॉमी को जिस स्किल की जरूरत है वो स्किल डेवलप नहीं कर पाया है, तो मार्केट इकोनॉमी के बेनिफिट से भी तो दूर रह जाएगा वो। जैसे पीपल लाइक यू हैव बीन द प्राइम बेनिफिशियरीज ऑफ मार्केट इकोनॉमी। क्यों? बिकॉज ऑफ योर एजुकेशन, स्कूल कॉलेज, इसकी वजह से यू हैव बीन द प्राइम बेनिफिशियरी ऑफ मार्केट इकोनॉमी। So you have not been excluded from the benefits offered by market economy. लेकिन अगर मान लिया वो स्किल हो ही नहीं किसी के पास, क्यों? क्योंकि वो पुअर था। यहां पर पॉवर्टी विल ब्रीड एक्सक्लूजन एंड एक्सक्लूजन विल फर्दर ब्रीड पॉवर्टी। एक्सक्लूजन की वजह से फिर पॉवर्टी आएगी, तो वो जिस कंडीशन में थे वो उसी कंडीशन में रह जाएंगे। ये प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज है। ये सारे फैक्टर्स के बारे में बात किया है सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने, और मुझे लगता है कि इससे बेहतरीन सोल्यूशन किसी ने नहीं दिया है। जो सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने कॉजेज बताए हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के, उससे शानदार कॉजेज आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये सारा ही सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन का रिकमेंडेशन है। अगर पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं, वैसे का वैसा छाप दीजिए। पूछा हुआ है कि डिटरमिनेंट्स क्या है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के, वैसे का वैसा उठा करके छाप दीजिए, उसमें कुछ चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं। कॉजेज तो ये सारे है ही है। सॉल्यूशंस में हम नया पॉइंट ऐड कर सकते हैं जो भी आपको करवाऊंगा। कॉजेज में तो इसमें से एक दो पॉइंट्स बस आप माइनस कर दीजिए, जैसे कि लैक ऑफ फूड सिक्योरिटी का है सेकेंड एआरसी ने। फूड सिक्योरिटी वाला इश्यू आज के डेट में नहीं है। हिंदुस्तान में लगभग एक्सट्रीम पॉवर्टी वाला कंडीशन नहीं है। जो फ्री राशन लोगों को मिला है उसमें लोग ये बता रहे हैं, आईएमएफ ने अपने रिपोर्ट में भी कहा है कि एक्सट्रीम पॉवर्टी वाला कंडीशन अभी हिंदुस्तान से खत्म हो गया है, और हंगर रिलेटेड डेथ वाला इश्यू भी हिंदुस्तान में नहीं। तो ये एक पॉजिटिव बात हुई है, वो प्राइम मिनिस्टर जो जन कल्याण योजना है। अदरवाइज सारा का सारा पॉइंट आप वैसे का वैसा इंक्लूड कर सकते हैं। कई सारे सजेशंस दिए हैं और कई सारे एरियाज में सेकेंड एआरसी ने वो एकदम एप्ट है, उसको आज भी एडमिनिस्ट्रेशन फॉलो करता है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर मान लिया कम्युनल रायट्स होता है, रायट्स में जो सेकेंड एआरसी ने सजेशन दिया है वो एग्जैक्टली वैसे का वैसा सजेशन आज के डेट में भी एडमिनिस्ट्रेशन फॉलो करता है। उसमें आपको बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं,
उसने जो सजेशंस दिए हैं उसमें सारे ब्यूरोक्रेट ही तो थे जो वो सारा सजेशन देने वालों में, तो वो एकदम वेल रिसर्च्ड है, वो सारी चीजें आज भी एप्लीकेबल है और अगले 5-7 साल 10 साल तक एप्लीकेबल रहनी है सारी की सारी चीजें। इतनी बात लिख लीजिए। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इन इंडिया is influenced by left wing extremism in India is influenced by the ideology of Mao, ideology of Mao, MAO. It is also known as Naxalite movement, Naxalite movement in India, which started in three villages of West Bengal. बोर्ड पर लिखा हुआ है, which started in three villages of West Bengal: Naxalbari, Khoribari, Phasi Deva village, Phasi Deva village of Darjeeling district. It started in May 1967 and it was brought under control 1967 and it was brought under control in August 1967. Full stop. Today left-wing extremism is present in 9 Indian states. In 9 Indian states, namely, dash लेकर लिखिए, namely UP, Bihar, Jharkhand, MP, Chhattisgarh, Odisha, West Bengal, Maharashtra, and Andhra Pradesh, Andhra Pradesh. There are 9 to 10,000 armed fighters and almost 40,000 full-time cadres on their roll, ROLL, roll. ROLL. Next, according to Ramachandra Guha, almost 40,000 full-time cadres on their roll. Next,
According to Ramachandra Guha, tribals are one of the communities. Tribals are one of the communities who has lost maximum from India's independence, who has lost maximum from India's independence and gained almost nothing and gained almost nothing. According to him, according to him, following reasons are responsible. Following reasons are responsible for the plight of tribals. For the plight, PLIGST, plight of tribals. One, their inadequate representation in civil administration. Second, their inadequate, बोर्ड पर लिखा हुआ है inadequate. Second, there is no pan-Indian, there is no pan-Indian tribal leader who can be considered as the leader, who can be considered as the leader of tribals of entire India, tribals of entire India. Third, third, displacement and forced eviction. Displacement and forced eviction, EVICTION, eviction of tribals. Next heading दीजिए, nature of left-wing extremism in India. Nature of left-wing extremism in India. One, nature of left-wing extremism has largely been nature of left-wing extremism has largely been agrarian, has largely been agrarian. It seeks to mobilize, discontent, and dispossessed. It seeks to mobilize discontent and dispossessed, discontent and misgovernance in rural areas to achieve its objectives. To achieve its objectives. Some of the major features of left-wing extremism movement are major features of left-wing extremism movement are one, it is very popular in some part of India. It is very popular in some parts of India.
parts of India. It has also gained confidence of people. It has also gained confidence of people. Next, second, it has grown in strength. It has grown in strength, particularly in forest and tribal areas, particularly in forest and tribal areas, by mobilizing forest and tribal areas by mobilizing dispossessed dispossessed and marginalized sections. Dispossessed and marginalized sections. It has created conditions. It has created conditions of non-functioning. It has created conditions of non-functioning of the government. Non-functioning of the government. And it has remained actively involved in disruptive activities to achieve its objective of taking political control of the area. Political control of the area. Next heading दीजिए. Causes for the spread of left-wing extremism, LWE. Causes for the spread of LWE. One. One. Land related factors. Land related factors. उसमें फर्स्ट पॉइंट लिखिए. वन, failure of land sealing laws in India. Failure of land sealing, CEILING, sealing laws in India. Second, there is encroachment and occupation. There is encroachment and occupation of government and community land. Government and community land by powerful section of society. Government and community land by powerful section of society. Next, existence of a special land tenure system. Existence of a special land tenure system. Land tenure system. ब्रैकेट में लिखिए. Enjoying exemption under sealing laws. Next, fourth, poor implementation of laws
poor implementation of laws prohibiting implementation of laws prohibiting transfer of tribal land, prohibiting transfer of tribal land to transfer of tribal land to non-tribals to non-tribals. Second factor, displacement and forced eviction. Displacement and forced eviction. One, forced eviction from land used by tribals, from land used by tribals. उसी में डैश तक लिखिए, tribals were evicted from their land. Tribals were evicted from their land in the name of developmental work. In the name of developmental work, they were displaced for various irrigation projects, power projects, without given adequate compensation or adequate arrangement for rehabilitation. Next, second point, large scale acquisition of land. Large scale acquisition of land for public purposes. Large scale acquisition of land for public purposes without appropriate compensation. Without appropriate compensation. Appropriate compensation, ये सब second point था. Displacement and forced eviction. Third, livelihood related causes. Livelihood related causes. One, corruption in public distribution system. Corruption in public distribution system. Next, disruption of traditional occupation and lack of alternative work opportunities. Next, social exclusion. A, denial of wages in some cases. In some cases,
B. Denial of dignity also. Denial of dignity also. C. Untouchability is also practiced in some form. Untouchability is also practiced in some form. Next, poor implementation. Poor implementation of special laws. Poor implementation of special laws on prevention of atrocities, prevention of atrocities, comma, protection of civil rights, protection of civil rights, and presence of bonded labor, and presence of bonded labor. Next, governance related issues. पांचवा, governance related issues. Governance related issues. One, there is a rampant corruption. There is a rampant corruption. Second, essential public services, essential public services like education and health are missing. Services like education and health are missing. Third, there is also misuse of power. There is also misuse of power by police. Next, unsatisfactory working conditions. Unsatisfactory working conditions of local institutions. Next, Forest Conservation Act 1980. Forest Conservation Act 1980. Forest Conservation Act 1980. It deprived tribals. It deprived tribals of even minor forest produce of even minor forest produce enjoyed by them during British era. Next, नोट देकर लिखिए नोट 1. Disruption of age-old tribal forest relationship. Disruption of age-old tribal forest relationship has been another cause of alienation
has been another cause of alienation. Traditionally, tribal life was well integrated with the forest. Traditionally, tribal life was well integrated with the forest, but but various legislations have significantly altered this relationship has significantly altered this relationship which used to be symbolic in nature, or altered this relationship which used to be not symbolic, symbiotic, which used to be symbiotic, spelling ye symbiotic in nature. Next, second point में लिखे नोट में ही, grievance redressal mechanism, spelling ये है, grievance redressal mechanism was also missing, which had provided fertile ground, for the spread of left wing extremism among tribals. Next, Forest Rights Act 2006. Forest Rights Act 2006. Next point पर लिखिए ना. Forest Rights Act 2006 had tried to remove historical injustices by restoring tribal rights over minor forest produce over minor forest produce. This act also gave definition of tribal. This act also gave definition of tribals. Definition of tribals and empowered Gram Sabhas in tribal areas. Next heading दीजिए, goals of left-wing extremism. Goals of left-wing extremism. To actualize their vision of a state. To actualize their vision of a state through revolution. They want to start revolution
through the support of, they want to start revolution through the support of dispossessed, through the support of dispossessed section of society, dispossessed section of society which constitutes a significant part of India's population, a significant part of India's population, India's population. Left-wing extremism thrives on, left-wing extremism thrives on deprivation, left-wing extremism thrives on deprivation and consequent discontent of people. Next, steps taken by India or steps taken by government. And consequent discontent, steps taken by government. अब मान लिया 4-5 पॉइंट मैंने आपको यहां लिखवाया, कभी पढ़ते समय आपको कुछ नया प्रोग्राम दिख जाए, उसको अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए और 2-3 चीजें अपने से पढ़िएगा, नोट कीजिए साइट में होमवर्क. फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980. Second, Forest Rights Act 2006. Third, Panchayat Extension of Scheduled Areas 1996. Panchayat Extension of Scheduled Areas, PESA, PESA 1996, PESA Act. Fourth, Schedule 5, Schedule 6, Schedule 5, Schedule 6. Next, steps taken by government. So, number of steps have been taken by government which has resulted into downward trend in left-wing extremism in India. So, number of left-wing extremism has significantly come down from almost 235 districts in 2010-11 to less than 80 districts today because of various developmental initiatives taken by Government of India and various offensive measures taken by Government of India. Both types of measures have been taken by government which has resulted into a downward trend in left-wing extremism in recent years. Those steps are: 1. Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2005. Scheduled tribes, scheduled caste and scheduled tribes have been the prime beneficiary of this act. Pehla. Second, in recent time, in the wake of COVID-19, Prime Minister
जन कल्याण योजना, which has been able to reduce extreme poverty drastically in India. Extreme poverty drastically. Then third one is Operation Green Hunt. This was started in 2010, under which massive deployment of security forces were done in left-wing extremism affected areas. The fourth, Roshni program, skill development initiative. देखते मत रहिए, लिखते भी रहिए, बाद में नहीं लिखवाऊंगा. Skill development initiative to skill tribal youth for skilling. Tribal youth. Aspirational district program. अब आप बताइए, 150 वर्ड में इतनी बातें भी नहीं लिखी जाती है. तो आपको पता बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन लिखा नहीं जाता है. लगभग हर बच्चे को पता होता है. अगर उन्होंने 150 वर्ड पूछा है तो 150 वर्ड हर बच्चे को लगभग पता होता है, जो मतलब जिसका फ्लूक से प्रीलिम्स ना निकल गया. प्रीलिम्स देने गए हैं और पता नहीं क्या हो गया, उस दिन 100 का 100 अटेम्प्ट ले लिया और किस्मत ऐसी थी कि जहां टिक कर दिया वही सही हो गया. तो ऐसी किस्मत हजारों लाखों में एक आध बच्चों की होती है. तो मान लिया कि अगर ऐसी किस्मत नहीं हो तो बाकी जो 80-90% बच्चे होते हैं, 60% लगा लीजिए, उनको उतना वर्ड तो पता ही होता है जितना उन्होंने पूछा हुआ होता है. सारा खेल वहां पर हो जाता है कि इंफॉर्मेशन को मैनेज करके और कैसे आप 100 वर्ड्स में लिखेंगे. भाई 150 वर्ड का क्वेश्चन है तो 25 वर्ड तो चला जाएगा इंट्रोडक्शन में, 25 वर्ड चला जाएगा कंक्लूजन में. एंड में आपके पास 100 वर्ड्स में ही आपको सारी बातें लिखनी, और आपके पास 10 से ऊपर प्रोग्राम में लिख ही नहीं पाएंगे आप. जो एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन है वो भी वहां पर आप नहीं लिख पाएंगे. एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, एस्पिरेशनल district program to bring development in those districts which are lagging on key social indicators. To bring development in those districts which are lagging on key social indicators, which are lagging on key
social indicators. और भी ऐड कर सकते हैं. Capacity building of civil society, security forces, civil administration, and Panchayati Raj institutions were done by the government. All these measures taken by Government of India has significantly brought down left-wing extremism affected areas from more than 250 to less than 80 today. हो गया आंसर. अब यहीं पर क्वेश्चन एकदम अलग से पूछा गया है कि सिविल सोसाइटी की कैपेसिटी बिल्डिंग, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की कैपेसिटी बिल्डिंग. तो क्लास में मैंने लिखाया हुआ था कैपेसिटी बिल्डिंग कि सिविल सोसाइटी की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए क्या करेंगे और सिक्योरिटी फोर्सेस की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए क्या करेंगे. ये हेडिंग दिलवा के लिखवाया हुआ था. और उसमें आया था पेपर में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन. कई बच्चों ने मुझे आंसर लिख के दिखाया और मैं आपको क्या बताऊं, उन्होंने सिविल सोसाइटी को ही सिविल एडमिनिस्ट्रेशन समझ लिया और वही लिख दिया. इस तरीके का ब्लंडर करने की कोई आवश्यकता नहीं है. सिविल सोसाइटी और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में जमीन आसमान का फर्क है. और लकीर के फकीर नहीं बनना है. थोड़ा सा आपको दिमाग तो लगाना ही होगा. बिना दिमाग लगाए हुए एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन के बेसिस पर भी आप ब्लंडर कर जाएंगे. आपके पास सब कुछ लिखा हुआ है तो भी गलती कर जाएंगे आप, अगर आप अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करते हैं तो. इसलिए अपना दिमाग यूज करना बहुत जरूरी पार्ट है. यही नहीं, सब चीज में, सारी जगह में अगर आपको इंफॉर्मेशन दे भी दिया जाए तो क्या ही फर्क पड़ना है. बहुत सारे लोग गाड़ी चलाना सीखते हैं लेकिन कुछ ही लोग अच्छी गाड़ी चलाना जानते हैं. कारण क्या है? सीखते सारे ही लोग हैं, लेकिन अच्छी गाड़ी चलाने के लिए आवश्यक है कि आप जब भी गाड़ी चलाना सीखना है अपना दिमाग लगाना होगा आपको. अगर अपना दिमाग आप नहीं लगाएंगे तो आप, हो सकता है कि 15 साल 18 साल की उम्र से गाड़ी चला रहे हो, लेकिन तब भी आपकी गाड़ी में बैठने के बाद एक स्किल्ड आदमी को यह पता चल जाएगा कि आप अच्छे ड्राइवर नहीं. कब क्लच का इस्तेमाल करना है, कब ब्रेक का इस्तेमाल करना है, स्मूथ ड्राइविंग आप करते हैं कि नहीं, ये तो तभी पॉसिबल हो पाएगा कि जब आप ड्राइविंग करते हैं और दिमाग भी इस्तेमाल करते हैं. आपको अपनी गलतियों के बारे में पता चलता रहता है कि अच्छा आज ये गलती हो गई मेरे से. इतनी छोटी सी बात है, इतना छोटा सा स्किल है, उसमें तो लोगों को फर्क आ जाता है. तो फिर अगर किसी को इतनी बड़ी पोजीशन मिल रही है तो वो बिना दिमाग लगाए हुए तो पॉसिबल नहीं है ना कि मिल जाए. इंफॉर्मेशन हर कोई वही पढ़ता है, लेकिन उस इंफॉर्मेशन का यूटिलाइजेशन कैसे होता है ये सब पर डिपेंड करेगा. तो इसलिए हर चीज में आपको दिमाग लगाने की आदत होनी चाहिए. क्वेश्चन पर वर्कआउट करने का तरीका आपको अभी से ही डेवलप करना होगा. जितना ज्यादा क्वेश्चन पर आप दिमाग लगाएंगे, माइंड आपका उतना ग्रो करता चला जाएगा, समय के साथ साथ उतना शार्पन होता चला जाएगा. जितना ज्यादा आपने फोकस रीडिंग पर किया हुआ है और क्वेश्चन पे कम किया हुआ है, दिमाग आपका उतना ज्यादा स्लो होता चला जाएगा. सिंपल लॉजिक है. इसलिए आप देखते होंगे कि बहुत हायर एजुकेशन वाले लोगों का नहीं हो रहा है, उनके अपने सब्जेक्ट से लेकर के भी पेपर दे रहे हैं तो उनका नहीं हो रहा है. और उन लोगों का हो जा रहा है जिन्होंने बेसिक लेवल का एजुकेशन उस सब्जेक्ट में लिया हुआ है,
या जिन्होंने उस सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं की है, वो बच्चे अच्छा कर रहे हैं उस सब्जेक्ट में। लेकिन जिन्होंने हायर एजुकेशन लिया हुआ है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, और वो सब्जेक्ट वो जब अपने ऑप्शनल में रख रहे हैं तो फंस जा रहे हैं, उनको नंबर ही नहीं आ रहा है। कारण क्या है? वो बहुत बुकिश हो जाते हैं, पढ़ते 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 इतनी सारी चीजें पढ़ लेते हैं कि आप बुकिश हो जाते हैं। तो आपके लैंग्वेज में सामने वाले को पता लगने लगता है कि किताब से चुराई हुई चीज है। जिस एक बच्चे ने बेसिक लेवल का मान लिया एजुकेशन लिया है, कोई भी सब्जेक्ट उठा लीजिए, अगर मान लिया किसी ने हिस्ट्री ही पढ़ा है, उसने बीए किया हुआ है, तो उसके पास बहुत ही बेसिक लेवल का इंफॉर्मेशन होगा। ग्रेजुएशन में बच्चा होता है तो कॉलेज में फेस्ट भी अटेंड करेगा, घूमेगा भी, उसके बाद वो सिविल सर्विसेज की तैयारी करेगा, तो उसके पास जितना स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है उसी के बेसिस पर वो दिमाग लगा करके और ज्यादा आंसर, अच्छा आंसर देने की कोशिश करेगा। तो उसके आंसर में हमेशा आपको नई बातें दिखेगी और फ्रेशनेस दिखेगा। दूसरा वाला बंदा है, मान लिया जो पीएचडी कर रहा है या जो कॉलेज में प्रोफेसर है, उसने 50 किताबें पढ़ी हुई है, उसके आंसर में वो बुकिशनेस आ जाता है। उसका आंसर देख करके ही ये समझ में आ जाता है कि ये बहुत मैच्योर आदमी का आंसर है, इसके आंसर में बहुत ज्यादा मैच्योरिटी है, वो आंसर में झलकेगा। अगर मान लिया मैं कोई आंसर लिखूंगा या मैं किसी चीज पर बोलूंगा तो उसमें आपको मैच्योरिटी झलक जाएगी, कुछ ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल होगा कि आपको मैच्योरिटी झलक जाएगी, आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये फ्रेशर तो नहीं होगा। लेकिन जो फ्रेशर होता है उसके आंसर में बहुत ज्यादा मैच्योरिटी नहीं होती है। पर्सनालिटी में मैच्योरिटी होना अलग चीज है, आंसर में मैच्योरिटी होना इज अलग चीज। पर्सनालिटी में मैच्योरिटी हो सकता है 18 साल की उम्र में भी हो जाए, लेकिन आपके आंसर में वो बुक वाली मैच्योरिटी बहुत कम एज में पॉसिबल नहीं है, नहीं हो सकता है, अनलेस कि आप ग्रेट पॉल सैमुअल्सन ना हो। ये पॉसिबल नहीं है कि बहुत ही कम एज में वो मैच्योरिटी होगी। ये कारण है कि डाइवर्स बैकग्राउंड के लोग अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर के भी अच्छा कर रहे हैं। तो इसलिए क्वेश्चन अगर आप देखेंगे 4-5 क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछा गया है। एक क्वेश्चन क्या पूछा है, मलकानगिरी से लेकर और नक्सलबारी तक के लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के बारे में पूछा हुआ है। कुछ बच्चे मेरे से आगे पूछने आए कि सर ये तो बताया नहीं आपने। मैंने कहा मलकानगिरी में माइनिंग का इशू था और नक्सलबारी में जमीन का इशू था, आंसर हो गया, जाइए। यही दो कीवर्ड है, दिमाग लगाना होगा ना आपको। जैसे उसने लिखा मलकानगिरी, आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि मलकानगिरी कहां है, तो मलकानगिरी उड़ीसा में है। मलकानगिरी में एक बड़ा फेमस केस हुआ था, एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट विनील कृष्णा को नक्सल्स ने किडनैप कर लिया था, एंड ही वाज अ वेरी फेमस आईएएस ऑफिसर, बहुत फेमस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। कुछ लोग होते नहीं कि डिस्ट्रिक्ट में बहुत फेमस हैं, लोगों के लिए बड़ा काम करते हैं। तो विनील कृष्णा का ऐसा था कि वो किसी भी एरिया में बाइक से ही चले जाते थे। नक्सल्स ने किडनैप कर लिया, किडनैप किया नक्सल्स ने, उसके बाद ट्राइबल्स ने ही प्रोटेस्ट किया। फिर 2-3 दिन के बाद विनील कृष्णा को छोड़ना पड़ा। क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ है कि मलकानगिरी से और नक्सलबारी तक का कि ट्राइबल मूवमेंट के नेचर के बारे में कुछ इस तरीके का, एग्जैक्टली मैं क्वेश्चन भूल रहा हूं। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में जो की वर्ड है वो है मलकानगिरी में माइनिंग वाला इशू था और नक्सलबारी में लैंड रिलेटेड इशू था। अब यहां आप कितने भी बड़े विद्वान हो, एग्जाम में हो सकता है ये हिट ना करे। जिसका दिमाग शांत होगा और पर्सनालिटी बहुत शांत होगी, बैलेंस्ड होगी, स्टेबल पर्सनालिटी होगी, उसका क्लिक कर जाएगा। जिसने खूब सारा क्वेश्चन किया हुआ है उसके दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि अच्छा मलकानगिरी का लोकेशन कैसा है। मलकानगिरी के लोकेशन से उसको यह पता चल जाएगा कि वो फॉरेस्ट एरिया है, जरूर वहां माइनिंग वाला इशू होगा। और नक्सलबारी के बारे में सबको पता है कि लैंड रिलेटेड इशू था। इस तरीके के इनोवेटिव क्वेश्चंस के लिए भी आपको रेडी रहना है। 5-7 क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ है, लगभग सारा ही क्वेश्चन एक लाइन पर उन्होंने पूछा है, लेकिन हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ हल्का सा ट्विस्ट किया हुआ है। यही क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूं कि डाउनवर्ड ट्रेंड लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में देखा गया है, तो क्यों डाउनवर्ड ट्रेंड देखा गया है। अभी आगे आपसे ये पूछ सकते हैं, मान लिया
जस्ट एग्जाम से पहले कोई नक्सल अटैक हुआ है या कुछ वायलेंट मूव ऐसा देखा गया है, तो वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि नक्सल मूवमेंट को फाइनेंशियली चोक करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए जा सकते हैं, या मेनली उनका सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग क्या क्या है और क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं फाइनेंशियली चोक करने के लिए उस मूवमेंट को। अब यहां आपको तुरंत दिमाग लगाना होगा कि अच्छा कहां से पैसा आता है उनको पैसा आता है, पहला कॉन्ट्रैक्टर से पैसा लेते हैं, माइनर्स से पैसा लेते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल से भी पैसा लेने का काम करते हैं। वो एक्सटॉर्शन, बेसिकली वो एक्सटॉर्शन रैकेट काइंड ऑफ चलाते हैं कि जहां पर वो बिजनेसमैन से पैसा लेने का काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर से पैसा लेने का काम करते हैं और माइनर से पैसा लेने का काम करते हैं। इन तीन जगह से तो एकदम वेरीफाइड सोर्सेस है, और एडमिनिस्ट्रेशन में अगर वो पैसा लेते हैं तो वो वेरीफाइड सोर्स इसलिए नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, नहीं तो कई सारे ऐसे एरियाज हैं कि वहां वो सबसे पैसा लेते हैं, कोई भी हो पैसा तो आपको देना पड़ेगा। मेन सोर्स उनका यही तीन है। क्या कर सकते हैं हम? पहला स्टेप लिया जा सकता है उनके इस नेक्सस को तोड़ने के लिए, माइनर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स और नक्सल्स के नेक्सस को तोड़ने के लिए शुरू के कुछ सालों में, 2-3-4 सालों तक अगर किसी एरिया में उनकी एक्टिविटीज बहुत बढ़ गई तो आप डेवलपमेंटल वर्क आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ को दे सकते हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को। इससे क्या है, उनको जो फाइनेंसिंग ठेकेदारों से वो पैसा लेते हैं, मान लिया कोई रोड बना रहा है, एलएनटी रोड बना रही है उस एरिया में, तो वो साफ साफ बोलेंगे कि पैसा तो नहीं तो काम नहीं करने दूंगा। आपको जान के हैरानी होगी कि किसी जमाने में अगर 100 रुपए का प्रोजेक्ट होता था, अगर मान लिया 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट है नक्सल अफेक्टेड एरिया में, तो रिलीज ही हुआ करता था गवर्नमेंट फंड से 1200 करोड़ रुपया। क्यों रिलीज होता था? क्योंकि 200 करोड़ रुपया तो आपको टैक्स देना ही पड़ेगा, उपाय कुछ नहीं है, अदरवाइज आपको काम ही नहीं करने देंगे। इसको रोकने का क्या उपाय है? इसको रोकने का उपाय है कि कुछ समय के लिए पूरा टास्क डेवलपमेंट वर्क का, जहां पर भी बहुत ज्यादा ऐसा इशू आ रहा है, आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ को दिया जा सकता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को। इससे उनको मिलने वाला पैसा खत्म हो जाएगा। दूसरा स्टेप क्या लिया जा सकता है? स्पेशल इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग बनाए जा सकते हैं, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सेल बनाया जा सकता है, प्लस नक्सल अफेक्टेड एरियाज में परसेप्शन मैनेजमेंट पर काम करने की भी जरूरत है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि परसेप्शन मैनेजमेंट के लिए क्या किया जा सकता है। तो जो भी डेवलपमेंट वहां होना चाहिए वो बहुत विजिबल डेवलपमेंट होना चाहिए। परसेप्शन मैनेजमेंट पर आप कैसे काम कर पाएंगे? नॉर्मली गवर्नमेंट क्या देखती है, सक्सेस को इस बात से जज करती है कि कितना अटैक हुआ है उस पर्टिकुलर एरिया में। अगर मान लिया अटैक नहीं हुआ है तो सरकार को लगता है कि सब कुछ ठीक है। सरकार यह नहीं देखती है कि यहां की सोशल इंडिकेटर में ये एरिया मान लिया बहुत पिछड़ा हुआ है और हमको यहां प्रोग्रेस लाने की जरूरत है, हमें यहां डेवलपमेंट लाने की आवश्यकता है। तो परसेप्शन मैनेजमेंट के लिए आपको विजिबल डेवलपमेंट करना होगा। विजिबल डेवलपमेंट मतलब लोगों की लाइफ में चेंज दिखना चाहिए। लोगों की लाइफ में चेंज कैसे दिखेगा? रोड्स होगा, स्कूल होगा, डिस्पेंसरी होगी, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स प्रेजेंट होंगे अपने प्लेस ऑफ पोस्टिंग पर, तो लोगों के लाइफ में आपको चेंज दिखना शुरू हो जाएगा। आप कहेंगे कि क्या नक्सल अफेक्टेड एरियाज में वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को काम करने देते हैं? हाँ, वहां नक्सल अफेक्टेड एरियाज में वो टारगेटेड किलिंग वाला वो नहीं है, तो वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को काम करने देते हैं। आप अगर ऑनेस्टली काम करते हैं तो आप बहुत पॉपुलर होते हैं। ऐसे ऐसे लोग रहे हैं, सिविल सर्वेंट रहे हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। नक्सल्स में उनसे पूछने आते थे, उनकी ईमानदारी के इतने चर्चे थे कि मजाल नहीं थे नक्सल्स की कि नक्सल्स उनको टच कर दें। विनिल कृष्णा का ही मैंने आपको एग्जांपल दिया, नक्सल्स ने किडनैप कर लिया, 3 दिन के बाद छोड़ना पड़ा।
क्योंकि आप अगर इतने ऑनेस्ट ऑफिशियल्स को किडनैप कर लेंगे या किलिंग कर लेंगे तो जो सेंटिमेंट है वो आपके अगेंस्ट चला जाएगा। उन्हीं ऑफिशियल्स को वहां पोस्टिंग दीजिए कि जिनका रिकॉर्ड रहा है, जिनका पूरा एकदम इंटेग्रिटी का रिकॉर्ड रहा है। वहां उनके एरियाज में अगर आप करप्शन करेंगे तब तो फंस जाएंगे, तब तो हो सकता है कि किलिंग भी हो जाए। तो इसीलिए कुछ जगहों पर इंडिया गवर्नमेंट को भी स्टेप्स लेने की जरूरत है। प्लस कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ सिविल सोसाइटी, सिक्योरिटी फोर्सेस, सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? एक तो डाउनवर्ड ट्रेंड हो गया है, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि डाउनवर्ड ट्रेंड क्यों हुआ है, और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को काउंटर करने के लिए। सारे क्वेश्चन में आंसर एक ही होगा, लैंग्वेज चेंज हो जाना है। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिख लीजिए, स्टेप्स टेकन बाय। ये सब लिख लिया ना सारे लोगों ने? नहीं लिखा है तो तेजी से लिख लीजिए। आवाज नहीं आ रही है, जोर से। फाइनेंशियली इंक्लूड करें, आगे अभी उसके बारे में बात करेंगे। सिविल सोसाइटी के थ्रू उनको इंक्लूड करने की प्लानिंग है, अभी करेंगे आगे। लिख लिया सारे लोगों ने? नेक्स्ट, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस की कैपेसिटी बिल्डिंग, वी कैन इन्वॉल्व NGOs as interlocutor in LWE affected areas. Second, NGOs can also play an important role in giving valuable policy inputs to government. Valuable policy input to government. They can also inform government about the performance of government programs and policies. क्यों एनजीओज को इन्वॉल्व करने की हमें जरूरत है वैल्यूएबल पॉलिसी इनपुट देने के लिए या परफॉर्मेंस ऑफ प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज को इवैल्यूएट करने के लिए हमें क्यों आवश्यकता है सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस का, एनजीओज का? तो उसके पीछे रीजन ये है कि देयर इज ऑफन a huge disconnect between what government thinks people need, what actually people need, and what is actually being done by the government. There is a huge disconnect. गवर्नमेंट को यह पता ही नहीं चल पाता है कि लोगों की क्या एक्सपेक्टेशंस है गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट को यह भी नहीं पता चल पाता है कि, अब ऑब्वियस सी बात है, अगर गवर्नमेंट को यह नहीं पता है कि लोगों की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, तो आप जो प्रोग्राम और पॉलिसी बनाएंगे उस एरिया के लिए वो सक्सेसफुल नहीं होना है, क्योंकि ह्यूज डिस्कनेक्ट होगा।
जो प्रोग्राम और पॉलिसी आप बना करके लाए हैं उसकी जरूरत ही नहीं है। आप कहेंगे इसका कोई एग्जाम्पल है क्या? हाँ बिल्कुल है एग्जाम्पल। इसका एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है और बहुत फनी एग्जाम्पल भी है कि नीलगिरी हिल्स में टोडास को भैंस दे दिया था एक बार सरकारी ऑफिशियल ने, और भैंस इसलिए दिया गया था कि वो भैंस का दूध पिएंगे और भैंस का दूध बेचेंगे भी, उससे उनको कुछ पैसा भी आएगा, कुछ कैश भी जनरेट होगा। बाद में 6-8 महीने के बाद लोगों ने विजिट किया तो सारे लोग भैंस कहीं नहीं दिखी, तो इन्होंने इंक्वायर किया क्या किया भैंस का। उन्होंने कहा हम खा गए भैंस। इसलिए मैंने आपसे कहा कि देयर इज ऑलवेज अ ह्यूज डिस्कनेक्ट बिटवीन what government thinks people need, what actually people need and what is actually being done by the government. इसमें बड़ा गैप होता है। और कोई भी प्रोग्राम जब शुरू होता है तो प्रोग्राम के परफॉर्मेंस में भी बड़ा गैप होगा। जो विजन और रियलिटी के बीच में बड़ा गैप होता है, तो गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि विजन और रियलिटी के बीच में क्या गैप है? विजन था आपका इतनी सारी चीजें अचीव करनी, रियलिटी यह है कि प्रोग्राम कुछ अचीव कर ही नहीं पाया। इस सरकार को कैसे पता चलेगा? सरकार को अब आप कहेंगे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अगर अपने ही प्रोग्राम को इवैल्यूएट करके और बताएंगे सरकार को, ऐसे नहीं होता है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स क्यों बताएंगे आपको कि हमने अच्छा काम किया है कि खराब काम किया है? वो तो 100% केसेस में कहेंगे कि बहुत अच्छा काम किया है मैंने। ऐसा काम कोई नहीं कर सकता है। रियलिटी यह है कि काम हुआ ही नहीं। तो इसलिए आपको इंडिपेंडेंट एजेंसी चाहिए जो सरकार को यह बताए कि एक प्रोग्राम का कैसा परफॉर्मेंस रहा है, वो प्रोग्राम कितना सक्सेसफुल रहा है। अदरवाइज सरकार को कभी पता ही नहीं चल पाना है कि सक्सेसफुल है कि नहीं है। गवर्नमेंट को पॉलिसी इनपुट कैसे मिलेगा? लोगों के क्या एस्पिरेशंस हैं, लोग क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, आप कहेंगे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बताएंगे। आपको हर जगह से डेटा कलेक्ट करना होगा और फिर दिमाग लगा करके बेस्ट पॉलिसी बनानी होगी उन एरियाज के लिए। आपके पास इंडिपेंडेंट सोर्सेस से भी कलेक्शन आना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अपने प्लेस ऑफ पोस्टिंग पर प्रेजेंट हैं कि नहीं है, ये कौन बताएगा? गवर्नमेंट को ये गवर्नमेंट ऑफिशियल तो बताएंगे नहीं कि हम अपने पोस्टिंग की जगह पर प्रेजेंट नहीं है, या हम अपने पोस्टिंग की जगह पे कभी प्रेजेंट रहते ही नहीं है। मान लिया 5 सरकारी ऑफिसर काम करता है किसी जगह पर, तो सब आपस में ये मिलजुल कर लेते हैं, एक ही आदमी वहां पर प्रेजेंट रहेगा और बाकी 4 आदमी छुट्टी पर रहता है। फिर उसमें से एक आदमी चला जाएगा और 3 आदमी, जो बाकी 4 आदमी छुट्टी पर है। इस तरीके से पूरा का पूरा सिस्टम ऑपरेट करता रहा है। तो वो अपने प्लेस ऑफ पोस्टिंग वाली जगह पर भी प्रेजेंट नहीं होते। ये कौन बताएगा गवर्नमेंट को? ये भी आपको एक इंडिपेंडेंट एजेंसी ही बताएगी। प्लस मिसयूज ऑफ पावर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? गवर्नमेंट ऑफिशियल कहीं मिसयूज ऑफ पावर तो नहीं कर रहे हैं नक्सल अफेक्टेड एरियाज में? गवर्नमेंट को ये कौन बताएगा? ये भी आपको इंडिपेंडेंट एजेंसीज ही बताएंगी। इसके लिए आप गवर्नमेंट ऑफिशियल पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। ऐसे ऐसे केसेस होते हैं, करप्शन इतने शानदार तरीके से होता है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। अगर आप मान लिया बहुत स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं है तो आपको पता भी नहीं चल पाएगा कि ऐसे भी करप्शन होता है क्या। मान लिया कहीं पर तालाब की खुदाई होनी है और तालाब 50 फीट का खोदा जाना है, वहां से रूल बन के आया है, लखनऊ से रूल बन के पहुंचा कि 50 फीट या 60 फीट तक तालाब की गहराई होनी है। जो बीडीओ होगा और ग्राम प्रधान होगा वो मिल करके 30 फीट की ही खुदाई करेगा और बाकी 30 फीट का पैसा खा जाएगा। मान लिया किसी जगह पर पेड़ लगाया जाना है, पेड़ लगाया जाना है, आपको प्रोजेक्ट मिला है किसी एनजीओ को 50 लाख रुपए का, उसने कोई पेड़ नहीं लगाया। क्या कर लीजिएगा आप अगर कोई चेकिंग नहीं हो रही है और उसने सरकार से पैसा भी ले लिया? हालांकि ये सब चीजें धीरे धीरे अब तो एनजीओ को पैसा मिलना भी बंद हो चुका है, लेकिन ये सब प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज तो है ही। ये सब प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज है, इसमें आप क्या कीजिएगा?
और कैसे आप मैनेज करेंगे चीजों को। इसीलिए आपको एक थर्ड पार्टी का असेसमेंट चाहिए जो गवर्नमेंट से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं हो। लेकिन हिंदुस्तान का मैक्सिमम एनजीओ इज अफेक्टेड बाय लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी, तो इसलिए उन एनजीओज को ये पावर देते समय इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि कहीं वो लेफ्टिस्ट ओरिएंटेशन से तो काम नहीं कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि वो अपना एजेंडा चला रहे हैं और वहां लोगों को सरकार के अगेंस्ट ही भड़काने का काम कर रहे हैं। आप कहेंगे ऐसे भी होता है क्या? खूब, सरकार से ही पैसा लेके और सरकार के अगेंस्ट भड़का देते हैं लोगों को। पता चलता है कि कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है, कहीं पर एल्यूमिना की रिफाइनरी बननी है, भाई जहां पर बॉक्साइट ओर होगा वहीं पे एल्यूमिना की रिफाइनरी बनेगी। वहां जाकर के ट्राइबल्स को भड़का दिया कि ये तुम्हारे रिसोर्सेस को लूट रहे हैं, गवर्नमेंट तुम्हारे लिए कुछ नहीं करती है, तुम लोगों को गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिवोल्ट करने की जरूरत है। और पता चला सारे ट्राइबल्स ने रोड जाम कर दिया, हंगामा हो गया, वहां खून खराबे का कंडीशन कर दिया। ये हुआ था नियामगिरी हिल्स में। यूपीएससी ने 2-3 बारी क्वेश्चन भी पूछा है, ये नहीं क्वेश्चन पूछा है कि क्या हुआ था, डोंगरिया कोंद ट्राइब पर क्वेश्चन पूछा है। नियामगिरी हिल्स में डोंगरिया कोंद ट्राइब रहते हैं, तो ये प्रैक्टिकली किसी बच्चे के लिए इंपॉसिबल है ये जानना कि कौन सा ट्राइब कहां रहता है, अनलेस कि वो न्यूज में ना हो। और वो न्यूज में जिस जिस साल में उन्होंने पूछा है उस साल में न्यूज में नहीं रहा है। सोच लीजिए, इसका मतलब है कि एग्जामिनर कितना स्मार्ट होता है, उसको ये पता है कि इस साल में न्यूज में नहीं है लेकिन ये 2 साल पहले न्यूज में था। नियामगिरी हिल्स में डोंगरिया कोंद ट्राइब को इन्होंने वेदांता की एक एल्यूमिना रिफाइनरी बनने वाली थी जिसमें 20,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होना था। इन्होंने ऐसा भड़काया कि वेदांता की रिफाइनरी वहां खुल ही नहीं पाई, रिफाइनरी नहीं खुल पाई। और इसमें किसका नुकसान हुआ? अल्टीमेटली तो इसमें कंट्री का भी नुकसान हुआ, लोगों का भी नुकसान हुआ, सबका नुकसान हुआ। और वो काम बाद में पता चला कि किसने किया था। जितनी एनजीओज वहां काम करती थी वो सब फंडेड थी अमेरिका से। किसी को फोर्ड फाउंडेशन फंड कर रहा था, किसी को ग्रीन पीस फंड कर रहा था, और उन सब ने इनको डायरेक्ट किया हुआ था कि इंडिया में कोई डेवलपमेंट वर्क करने ही मत दो। ये प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के समय में 2012 की बात है। इंटेलिजेंस एजेंसी ने रिपोर्ट किया, सरकार एकदम शॉक्ड हो गई, कोई काम ही नहीं हो पाता था पूरे कंट्री में। जैसे कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होता था वैसे ही ऐसा कंडीशन क्रिएट कर दिया जाता था कि डर के मारे कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल जाता नहीं था वहां, लोगों को भड़का करके। तो सरकार को शुरू में समझ नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। बाद में इंटेलिजेंस एजेंसीज ने रिपोर्ट किया कि ये एनजीओज फॉरेन फंडेड एनजीओज हैं और इनको स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि किसी भी डेवलपमेंट वर्क को कंप्लीट ही नहीं होने देना है। और पता चला कि उसको कौन फंड कर रहे हैं, तो किसी को फोर्ड फाउंडेशन, किसी को ग्रीन पीस, क्या पता चाइनीज भी फंड कर रहे हो बहुत सारे एनजीओज को। डायरेक्टली फंडिंग थोड़ी होती है। चाइनीज ने फंड किया फोर्ड फाउंडेशन को और फोर्ड फाउंडेशन से फंडिंग हो गई यहां। तो क्या पता कि अमेरिकन फंड ना कर रहे हो, कोई चाइनीज फंड कर रहे हो, और वो चाइनीज के बिहेस्ट पर हिंदुस्तान को फंड कर रहे हो, इंडियन एनजीओज को, और इंडियन एनजीओ सारे डेवलपमेंटल वर्क को इंस्टॉल कर रहे हो। तो इसीलिए सिविल सोसाइटी के एंगेजमेंट में ये जरूरी है कि हमारे पास ये इंफॉर्मेशन होना चाहिए, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, कि कौन एनजीओ एकदम क्लीन है और कौन लेफ्टिस्ट ओरिएंटेशन को ध्यान में रखते हुए काम नहीं कर रहा है। उन्हीं एनजीओ को आपको इंटरलोक्यूटर बना करके और इंगेज करने की जरूरत है। अदरवाइज पता चलेगा कि ऑब्जेक्टिव कुछ और था और हो कुछ और गया। आपने उनको इंगेज इसलिए किया कि वहां लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को कंट्रोल किया जा सकता है, लोगों को मेन स्ट्रीम में इंक्लूड किया जा सकता है, हो उसका उल्टा गया। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस की कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की कैपेसिटी बिल्डिंग मतलब, पहला जो अभी आपको थोड़ी देर पहले लिखवाया, ग्रीन हंट, इसका एक एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल है ग्रे हाउंड। आंध्रा पुलिस ने
स्पेशली तैयार किया हुआ था ग्रे हाउंड को जंगल वॉरफेयर के लिए। और हालत यह हो गई कि आंध्र प्रदेश के उन एरियाज में, जहां आंध्र प्रदेश के जंगलों में जहां कभी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का एकदम डोमिनेंस रहा करता था, धीरे 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 वो उस एरिया से आउट हो गए और फिर वो बाकी के स्टेट्स में चले गए। तो इस आपको आंध्र पुलिस को स्पेशली ट्रेन उन्होंने जंगल वॉरफेयर के लिए किया हुआ था। ऐसी स्पेशल यूनिट्स अलग अलग स्टेट में बनाई जा सकती हैं। प्लस उनके वर्किंग कंडीशंस को इंप्रूव किया जा सकता है कि उनके पास जैमर्स होने चाहिए, मॉडर्न व्हीकल्स होने चाहिए, मॉडर्न वेपन्स होने चाहिए, क्योंकि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में अफेक्टेड नक्सल्स के पास, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरियाज में उनके पास मॉडर्न वेपन्स भी होता है और उनके पास सारी फैसिलिटीज होती है और सारा क्रेडिबल इंफॉर्मेशन भी होता है, क्योंकि मार्जिनलाइज सेक्शन का सपोर्ट उनको काफी सारे एरियाज में मिलता रहा है। अभी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन उनको काफी सारे एरियाज में मिलता रहा है। इसलिए कैपेसिटी बिल्डिंग, आपको ऑफेंसिव मेजर्स भी लेने होंगे, एट द सेम टाइम कैरेट एंड स्टिक वाली स्ट्रैटेजी। एक हाथ में कैरेट भी होना चाहिए, दूसरे हाथ में स्टिक भी होना चाहिए। नेगोशिएशन भी साथ साथ चलना चाहिए, लेकिन ऑफेंसिव मेजर्स भी आपको साथ साथ लेने होंगे उन एरियाज में जाकर के। प्लस सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के फंक्शनिंग को इंप्रूव करने की जरूरत है। एक इशू जो लगातार इंडिया फेस कर रहा है वो ये फेस कर रहा है कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरियाज में लोगों के बीच में और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के बीच में लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होता है। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन ये एक बड़ा इशू रहा है एडमिनिस्ट्रेशन में। एक बड़ी अच्छी बुक है, सिविल सर्विसेज पे लिखी गई बुक है, इंग्लिश ऑगस्ट। उस बुक को उपमन्यु चैटर्जी ने लिखा है, बहुत फेमस राइटर हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, अभी तो मुझे लगता है शायद रिटायर हो गए हैं। उपमन्यु चैटर्जी ने लिखा है। तो उस बुक में ये बताया है कि एक यंग आईएएस रिक्रूट होता है जिसका ट्रांसफर हो गया है एक टाउन में जिसका नाम है मदना। तो वो नया रिक्रूट होता है, वो वहां जाता है मदना में। तो वो अर्बन एरिया में रहा हुआ, वो दिल्ली का बच्चा होता है, उसका सिलेक्शन हो जाता है सिविल सर्विसेज में। फिर मदना में उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो उस समय जिसके अंडर में काम कर रहा होता है वो लड़का, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसको उनको ट्रेन कर रहा होता है उस लड़के को। तो उपमन्यु चैटर्जी ने लिखा है कि मतलब कि इन द फ्रॉम द आइज ऑफ प्रोटेगोनिस्ट, जो मेन प्रोटेगोनिस्ट होता है ऑगस्ट सेन नाम होता है उसका। तो लिखा है कि मदला में वो बैठा होता है और लोग अपना प्रॉब्लम सुनाने के लिए आते हैं उसके पास। सारे लोग अपना प्रॉब्लम सुनाते हैं, उसके बाद वो प्रोटेगोनिस्ट लिखता है कि मुझे समझ कुछ नहीं आया कि ये लोग कह क्या रहे हैं। इसका मतलब है एक तो उसको भाषा भी समझ नहीं आ रही थी, उनकी बातें भी नहीं समझ आ रही थी, और कोऑर्डिनेशन का इश्यू था। तो ये कोऑर्डिनेशन का इश्यू हर लेवल पर एग्जिस्ट करता है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को इसीलिए ये पता नहीं चल पाता है कि लोग कौन से चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, उनके सामने कैसे चैलेंजेस हैं, क्योंकि वो लोगों के साथ कनेक्ट ही नहीं कर पाते हैं। लोगों के साथ आप क्यों नहीं कनेक्ट कर पाते हैं? कनेक्ट आप इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि आप कंपैशनेट होकर नहीं सोचते लोगों के बारे में। आप में कंपैशन की कमी होती है। ड्यूटी और कंपैशन में फर्क होता है, ये पता है कि नहीं? ड्यूटी और कंपैशन में कोई मुझे बता सकता है क्या फर्क होता है? ड्यूटी और कंपैशन में फर्क होता है। अगर आप ड्यूटी समझ के काम कीजिएगा, अभी मैं बताता हूं क्या फर्क होता है, अगर किसी को नहीं पता है तो। क्लोज है, लेकिन आंसर में थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई करना होगा। क्या एकदम बेसिक फर्क होता है ड्यूटी और कंपैशन में? मान लिया आप सिविल सर्वेंट हैं
और मैं आपसे कह रहा हूं कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन का इसलिए इश्यू होता है कि सिविल सर्वेंट हो सकता है कि ड्यूटीफुल हो लेकिन कंपैशनेट ना हो। कंपैशनेट ना हो तो कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया। तो मेरे कहने का क्या मतलब है, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं कि आप टाइम पर ऑफिस जाते हैं, आप वहां रहते हैं, पूरा समय देते हैं, अपना काम ईमानदारी से आप करते हैं, लेकिन आप में कंपैशन की कमी है और इसीलिए वो कंपैशन की बात करते हैं। ड्यूटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन। गवर्नमेंट कैन फोर्स यू टू परफॉर्म योर ड्यूटी। आप नहीं जाएंगे तो आपको सस्पेंड भी किया जा सकता है। इवन सोसाइटी कैन फोर्स यू, इवन गवर्नमेंट कैन फोर्स यू टू परफॉर्म योर ड्यूटीज। समझ गए? सोसाइटी, गवर्नमेंट सब आपको फोर्स कर सकते हैं कि भाई ड्यूटी अपनी परफॉर्म करना है। जैसे एक एग्जांपल आपको देता हूं, सोसाइटी एंड गवर्नमेंट कैन फोर्स यू टू लुक आफ्टर योर एलिंग पेरेंट्स। आपकी मम्मी पापा की तबीयत खराब है और मान लिया कि आप नहीं देखना चाहते हैं, सोसाइटी और गवर्नमेंट दोनों फोर्स कर सकती है आपको, नहीं बेटा देखना तो पड़ेगा, उपाय कुछ नहीं है, तुमको सजा दी जा सकती है अगर नहीं देखोगे तो। लेकिन कंपैशन किसको बोलते हैं? व्हेन यू गो बियॉन्ड ड्यूटी। जो आपने कहा कि टू पुट योर हार्ट एंड सोल, टू गो बियॉन्ड योर ड्यूटी, एंड देन व्हेन यू आर कंपैशनेट यू रियली वांट टू सॉल्व अदर्स प्रॉब्लम्स। समझ गए? जब आप कंपैशनेट होते हैं तो आप केवल ड्यूटी नहीं सॉल्व करते, ड्यूटी नहीं पूरा करते हैं, आप उसकी सहायता भी करना चाहते हैं और उसके प्रॉब्लम को सॉल्व भी करना चाहते हैं। अगर वो कंपैशन आप में नहीं है और केवल आप ड्यूटीफुल हैं, केवल आप अपने ड्यूटी को परफॉर्म करना चाहते हैं, तो फिर आप इंडिया जैसी सोसाइटी में आपसे जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो पूरा नहीं कर पाएंगे। एक सिविल सर्वेंट को कंपैशनेट भी होना है। आप अगर कंपैशनेट नहीं है तो आप कभी लोगों के साथ कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। कनेक्ट नहीं कर पाएंगे तो उनकी समस्याओं के बारे में आपको कभी पता ही नहीं चल पाएगा। आपको यह लग रहा है कि मैं तो यार खूब काम करता हूं, सुबह से शाम तक मैं ऑफिस में ही रहता हूं, वो इनफ नहीं है। तो इसका एग्जाम्पल है ड्यूटी और कंपैशन का। सोसाइटी एंड गवर्नमेंट कैन फोर्स यू टू परफॉर्म योर ड्यूटीज टुवर्ड्स योर पेरेंट्स, बट नो सोसाइटी एंड गवर्नमेंट कैन फोर्स यू टू लव योर पेरेंट्स। समझ गए? अब आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। कोई भी सोसाइटी और गवर्नमेंट ये फोर्स नहीं कर सकती है कि आपको अपने पेरेंट्स को लव करना है। हाँ, ये जरूर फोर्स किया जा सकता है कि तबीयत खराब है तो तुमको देखना पड़ेगा, नहीं देखोगे सजा हो सकती है, ये किया जा सकता है आपके साथ। लेकिन ये नहीं कहा किया जा सकता है कि आपको अपना ड्यूटी परफॉर्म करना है बिकॉज यू लव योर पेरेंट्स। ये नहीं किया जा सकता है। इसके लिए तो आवाज अंदर से आनी चाहिए ना। इसको कोई सोसाइटी और कोई गवर्नमेंट आपको कंपेल नहीं कर सकती है। तो मान लिया आप सिविल सर्वेंट हैं, आपके सिविल सर्वेंट का मतलब ये ध्यान में रखिएगा केवल आईएएस आईपीएस नहीं होता है। मतलब सिविल सर्वेंट का मतलब जो गवर्नमेंट ऑफिशियल होता है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। आप सिविल सर्वेंट है और आपके अंदर ये कंपैशन नहीं, कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे ना आप लोगों के साथ। आप अपना काम करेंगे और अपने आप को आप जस्टिफाई डेली करते रहेंगे कि मैं अपना काम तो बहुत ईमानदारी से करता हूं, लेकिन जब तक आप कंपैशनेट नहीं होंगे आप अपना काम ईमानदारी से कभी कर ही नहीं पाएंगे। समझ गए? तो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वो तालमेल की कमी होती है, उनका कोऑर्डिनेट ही कभी नहीं कर पाते हैं आम जनता के साथ, क्योंकि वो कंपैशनेट नहीं होते हैं। और कंपैशन के लिए आपको ट्रेन होने की आवश्यकता नहीं है, वो आपके अंदर से आवाज आनी चाहिए कंपैशन के लिए। कोई ऑफिसर अगर कंपैशनेट होगा ना तो वो आपको दिख जाएगा उसका कंपैशन। वो जब लोगों के लिए काम करेगा तो वो आपको ये फील हो जाएगा कि ये काम ये किसी और चीज के लिए नहीं कर रहा है। इसको जब आप बहुत कंपैशनेट होते हैं तो आपको ये भी इच्छा नहीं होती है कोई आपकी तारीफ करे।
आपको अपना काम ईमानदारी से करना होता है और आप अपना काम ईमानदारी से कर रहे होते हैं। आपको अंदर से ये फीलिंग आती है कि नहीं मुझे ये करना है, इसके लिए मुझे कोई समाज से और गवर्नमेंट से रिवॉर्ड नहीं चाहिए। वो कंपैशन आपकी पर्सनालिटी का ही पार्ट होता है। लेकिन मजे की बात यह है कि यह कंपैशन किसी को सिखाया नहीं जा सकता है। यह एकदम क्लियर कट बात है, यह कंपैशन कोई किसी को नहीं सिखा सकता है। और एथिक्स का पेपर लेकर के तो बिल्कुल नहीं सिखा सकते हो कि पेपर लेकर के और तुम किसी को कंपैशनेट बना दो, यह सब फालतू की बात है। वो आपके अंदर से ये फीलिंग आनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत कमाल का काम किया है, ऐसे ऐसे सिविल सर्वेंट्स हैं, लेकिन वो कमाल का काम करने के लिए ये जरूरी है कि आपके अंदर वो फीलिंग होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था श्रीवत्स कृष्णा का। श्रीवत्स कृष्णा ने जब साइबराबाद बनाया था तो 4 साल में बना दिया था। वो वर्ल्ड का बेस्ट टेक्नोलॉजी क्लस्टर था और उस पीरियड में श्रीवत्स कृष्णा का रूटीन होता था सुबह 7 बजे से लेकर रात के 3 बजे तक, और 4 साल के रिकॉर्ड टाइम में वो साइबर क्लस्टर बना था साइबराबाद। ये बिना कंपैशन के पॉसिबल नहीं है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में जाने के बाद भी वहां से वापस आकर के और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ज्वाइन करना वॉज अ बिग थिंग। वो भी तब जबकि उस आदमी ने नेस्डेक में भी काम किया था, उसके बाद वर्ल्ड बैंक में भी काम किया था, और फिर वापस आकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ज्वाइन करना और कंट्रीब्यूट करना, ये बहुत बड़ी बात है। तो इस टाइप के आपको ढेरों लोग मिलेंगे सिविल सर्विसेज में भी और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में भी, कि जो सोसाइटी के लिए बहुत इफेक्टिवली और बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। वो बहुत ही कंपैशनेट होते हैं, ये उनकी पर्सनालिटी का पार्ट होता है। वो काम करते समय ये ध्यान नहीं रखते हैं कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर रहा हूं तो मैं एहसान कर रहा हूं। उनके अंदर ये फीलिंग होती है कि नहीं, मैं इनके लिए काम कर रहा हूं, और वो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल फील करता है। तो पहला तो कोऑर्डिनेशन की कमी है। दूसरा, उनको ट्रेन किए जाने की जरूरत है, जिससे लोगों के साथ वो कनेक्ट कर सके अपने आप को। तीसरा, गवर्नमेंट को यह इंश्योर करना है दैट दे शुड रिमेन प्रेजेंट एट देयर प्लेस ऑफ पोस्टिंग। पहले तो इसी उत्तर प्रदेश में होता था। मैं पता नहीं कितने लोगों को हम लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी के पीरियड में जानते थे, जो लोग दिल्ली में रह के आईएएस की तैयारी भी कर रहे थे और वहां टीचर भी थे, और वो यहां से सैलरी भी उठाते थे और वो वहां तैयारी भी करते थे और कभी वो स्कूल जाते भी नहीं थे। तो जब यहां ऐसे हो सकता है जहां पावरफुल सिविल सोसाइटी है, तो ट्राइबल एरियाज के बारे में क्या ही बात करना। वहां तो हो सकता है कि कभी जाता भी ना हो ऑफिस, और पूरे करियर में 2 4 5 बार गया हो और पैसा उठाने के लिए ही जाता हो हमेशा ऑफिस में, ऐसा भी हो सकता है। और फाइनली, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को आपको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। इतनी बात पहले लिख लीजिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग, capacity building of civil society, capacity building of following institutions, ऐसे लिखिए, capacity building of following institutions. Following institutions: 1, civil society; second, security agencies; third, civilian administration; fourth, panchayati raj institutions. So first, civil society organizations. There should be greater involvement of
there should be greater involvement of civil society organizations, greater involvement of civil society organizations in bringing peace, in left-wing extremism, bringing peace in left-wing extremism affected areas. NGOs should work in close cooperation should work in close cooperation with government officials with government officials. They should not work they should not work leftist ideological orientation with their leftist ideological orientation. They should not work with their leftist ideological orientation. Bracket में लिखे some NGOs have been alleged 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 to sympathize with left wing extremism because of their ideological orientation. Next, CSOs can play an important role. Civil society organizations can play an important role in keeping a check on the abuse of power by police and other functionaries so that rule of law can be ensured. Next, CSOs can also work as an interlocutor. बोर्ड पर लिखा हुआ है. CSOs can also work as an interlocutor so that negotiation could be made possible between government and Naxals. Next, they can also educate people. About the futility of violence. They can also educate people about the futility, FUTILITY, futility of violence, and make government institutions to work within the framework of law. Make government institutions to work within the framework of law. Next heading दीजिए, capacity building of security agencies.
of security agencies. One, it is an important aspect of tackling. It is an important aspect of tackling left wing extremism. It is an important aspect of tackling left wing extremism because without ensuring law and order, because without ensuring law and order, economic development of the area, economic development of the area will not be possible. Second, second, development is an important aspect of maintaining. Development is an important aspect of maintaining peace. Aspect of maintaining peace in left wing extremism affected areas. Left wing extremism affected areas, but it must be accompanied by actions of security forces. But it must be accompanied by actions of security forces. Next, security forces themselves can be entrusted, entrusted with the task of. Security forces themselves can be entrusted with the task of carrying out developmental works. For example, security forces can look after development of schools, health institutions, etc. They can themselves look after roads. They can themselves look after roads in some areas. उसी में they can themselves look after roads in some areas. Next, look after roads. Look after roads, schools. Next, they should work within the framework of law. They should work within the framework of law. They need to be sensitized. They need to be sensitized. SENSITIZED. Sensitized through training. Next, especially trained units like Greyhound. बोर्ड पर लिखा हुआ है. Specially trained units like Greyhound to be raised. Greyhound can also be raised to tackle
insurgency situation. To tackle insurgency situation. Next, there should be close cooperation between security forces and local population. There should be close cooperation between security forces and local population so that intelligence gathering could be made possible. Intelligence gathering could be made possible. Next, capacity building of civil administration. Capacity building of civil administration. 1. Delivery of services. Delivery of services is an essential part of government's strategy. Delivery of services is an essential part of government's strategy to tackle LWE. To tackle LWE. For this purpose, full stop के बाद लिखिए, for this purpose, administrative officials, for this purpose, administrative officials should be well trained and also motivated so that quality of service delivery can be ensured. Quality of service delivery can be ensured. Second, government officials should work within legal frameworks and norms. Government officials should work within legal frameworks and norms. Third, it should be ensured by the government. It should be ensured by the government that government officials remain present at their place of posting. Should remain present at their place of posting. Next, capacity building of local bodies. Capacity building of local bodies. Capacity building of panchayat. Capacity building of panchayat is another important aspect of tackling left wing extremism. Is another important aspect of tackling left wing extremism. Local problems should be solved with the help of local bodies should be solved with the help of local bodies and local population
and local population. Government in this direction has taken a number of steps. Government in this direction has taken a number of steps. One, Forest Rights Act. One, Forest Rights Act 2000, Forest Rights Act 2006. It gave enormous power to Gram Sabhas. It gave enormous powers to Gram Sabhas. Second, Panchayat extension to scheduled areas. Panchayat extension to scheduled areas Act 1996. To scheduled areas Act 1996. इसमें नीचे एरो देकर के एक पॉइंट लिख लीजिए. This act came into existence This act came into existence for giving more autonomy to tribal, for giving more autonomy to tribals in management of their affairs, in management of their affairs, management of their affairs. Bracket में लिखिए. For tribals living in scheduled areas. For tribals living in scheduled areas. Next, PESA Act recognizes greater autonomy to tribals living in scheduled areas. To tribals living in scheduled areas. This act confers more powers to Gram Sabhas, and state legislature remains in advisory role, and state legislature remains in an advisory role to ensure proper functioning of panchayats, to ensure proper functioning of panchayats. Next, this act confers following powers to Gram Sabhas. This act confers following powers to Gram Sabhas. For any work related to displacement, rehabilitation and land acquisition
Gram Sabhas need to be consulted. Gram Sabhas need to be consulted. Need to be consulted. Second, tribal rights over minor forest produce. Tribal rights over minor forest produce. Minor forest produce have been recognized. Have been recognized. Third, this act also tries to remove. This act also tries to remove main cause of alienation of tribals. Main cause of alienation of tribals, that is alienation of tribals, that is land alienation. Next, money lending process or money lending business will also be controlled. Will also be controlled under पेसा 1996 और बाकी चीजें अपने से भी पढ़ लीजिएगा. Under पेसा 1996. नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए. नेक्स्ट सेपरेट पॉइंट है, government should come out with a new surrender policy. Government should come out with a new surrender policy in left-wing extremism affected areas. A new surrender policy in left-wing extremism affected areas, which should be more inclusive, job oriented, to wean away, W-E-A-N, to wean away youth from left wing extremism. Wean away youth from left wing extremism. And finally, cutting off the sources of finance. Cutting off, heading दीजिए, cutting off the sources of finance for Naxalites. Cutting off the sources of finance of Naxals. This is another important strategy. उसी में डैश देकर लिखिए. This is another important strategy. This is another important strategy to tackle LWE, because Naxalite movement will not be able to sustain itself, because Naxalite movement will not be able to sustain itself without finances. Without finances. They mobilize funds by extorting people. They mobilize funds by extorting people. Extort, E-X-T-O-R-T. Extorting people and contractors. Working on various projects, and contractors working on various projects
in affected areas. In affected areas. Next point we'll look at. It has been suggested that construction work should be done by BRO. It has been suggested that construction work should be done by Border Road Organization. Border Road Organization for the time being to stop the flow of funds towards Naxals. Next, government should check transporter Naxals contractors. Government should check transporters, contractors, Naxals, Nexus, 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 and for this purpose, Economic Offences Wing, can be constituted. Next, special efforts should be given to check flow of funds. Efforts should be given to check flow of funds towards Naxals. For this purpose, full stop. For this purpose, anti-money laundering cells should be constituted. अब जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सरेंडर पॉलिसी अभी तक कैसा रहा है? झारखंड सरकार ने कहा कि जो नक्सल है, मान लिया, अगर वो सरेंडर करता है तो हम उसको कुछ कहा 1.5 लाख या 2.5 लाख रुपया कैश देंगे और 2 बीघा जमीन देंगे. उड़ीसा गवर्नमेंट ने कहा कि हम उसको 1 बीघा लैंड देंगे और 3 लाख रुपया कैश देंगे. इतना एम्प्लॉयमेंट है कि जो नक्सल नहीं था उसने भी कहा हम भी नक्सल हैं. और अब चेक करने का कोई तरीका तो है नहीं कि कौन नक्सल है और कौन नहीं है. प्रैक्टिकल सी बात यही है ना. चेक करने का क्या तरीका है? कैसे तुमको ये पता चल पाएगा कि कौन नक्सल है और कौन नक्सल नहीं है? दूसरा, अगर तुम पैसे के लिए बोलोगे कि मैं तुमको पैसा दूंगा, तुम नक्सलिज्म छोड़ करके आ जाओ. अब इसमें सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो पैसा लेकर के फिर भाग जाएगा. तो ऐसा ही हुआ. काफी सारे लोग ऐसे थे जो आए, सरेंडर किया, पैसा लिया, चले गए. तो आपको इनोवेटिव मेजर्स के साथ आना होगा. मान लिया आप उसको कहिए कि मैं तुमको पैसा नहीं दूंगा लेकिन नौकरी दे दूंगा, और नौकरी ऐसे नहीं दूंगा, उसके लिए 6 महीने साल भर की ट्रेनिंग होगी. उस ट्रेनिंग के पीरियड में जो स्टाइपेंड होता है वो दूंगा और बाद में तुमको नौकरी मिल जाएगी. या नौकरी जो किसी एक जगह पर उनको नौकरी दिलवा दीजिए, प्राइवेट सेक्टर में या कहीं भी. आपको इफेक्टिव सरेंडर पॉलिसी के साथ आना होगा. अगर आप पैसा दीजिएगा तो वो सस्टेनेबल चीज ही नहीं है. 3 लाख 4 लाख रुपया दिया, पैसा आपसे कलेक्ट कर लिया, चला जाएगा वो. अगर आपने 6 महीने साल भर की ट्रेनिंग दी उनको, उसके बाद कहा कि आपको हम इंडक्ट कर लेंगे,
किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में, वो ज्यादा सस्टेनेबल मेजर है। और हम आपको लैंड देंगे जिसको तुम सेल नहीं कर सकते हो, वो ज्यादा सस्टेनेबल मेजर है, बजाय कि तुम उनको कैश दे करके, और कैश देके तो तुम मतलब लिटरली आदत बिगाड़ने का काम कर रहे हो। और कैश दे करके तुम कितने दिन तक उनको रोक लोगे, स्पेशली जो बहुत ट्रेंड और बहुत आइडियोलॉजिकली ड्रिवन नक्सल है, वो तो नहीं आएगा कैश के बाद भी। लेकिन मैक्सिमम लोग जो ऐसे ही ज्वाइन कर लेते हैं, वो भीड़ का हिस्सा होते हैं। लीडरशिप जो होगा 10-15 आदमी, जो टॉप लीडरशिप होगा, वो तो बहुत आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड होगा। लेकिन बाकी लोग जिन्होंने ऐसे ही ज्वाइन कर लिया है, उनको तुम नौकरी दो, बजाय कि तुम उनको ये कह रहे हो कि मैं तुमको कैश प्रोवाइड करूंगा। ये कोई सोल्यूशन नहीं है। तो इसलिए एक अच्छी सरेंडर पॉलिसी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बनानी पड़ेगी नक्सल्स को लेकर के। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मनी लॉन्ड्रिंग। आजकल न्यूज में भी खूब है मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग से मीनिंग ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, the process through which black money is converted into the process through which black money is converted into white. It's converted into white money. Or the process through which money generated from illegal activities are given legal appearance it's called money laundering. Or the process through which dirty money is cleaned it's called money laundering. सिंपल। ब्लैक को व्हाइट करने का तरीका, इलीगल एक्टिविटीज के थ्रू पैसा मिला उसको लीगल अपीयरेंस देने का और लीगल ओरिजिन देने का तरीका, और द प्रोसेस थ्रू विच डर्टी मनी इज क्लीन्ड इट्स कॉल्ड मनी लॉन्ड्रिंग। समझ गए? तो मैंने आपसे पहले भी कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस बात से बहुत प्रॉब्लम नहीं है अभी तक, आगे नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। प्रोसेस जैसा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, वैसे आगे आने वाले समय में धीरे धीरे ऐसे भी करप्शन कंट्री के अंदर बहुत कम होता चला जाएगा। अभी ही बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिन्होंने हीट फेस करना शुरू कर दिया है, और उसमें सबसे आगे नाम आता है इंडियन रेवेन्यू सर्विस का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का। पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में मतलब बहुत करप्शन होता था। एक बार तो आईआरएस लॉबी ने अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट कहा था कि ये मानहानि का मुकदमा कर देंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बताओ मैं कितना ईमानदार हूं, भाषण देते हुए कि मैं कितना ईमानदार आदमी हूं। मैं इनकम टैक्स कमिश्नर हुआ करता था, जहां चपरासी के पास भी करोड़ों रुपया होता है, मेरे पास कितना रुपया होता, लेकिन तुम लोगों के लिए मैंने
और देश की सेवा करने के लिए मैंने किसी से कोई पैसा नहीं लिया। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि आप ये बोल करके क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सरकार की रडार पर भी था। आज के डेट में इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के ऑफिसर्स का कहना है कि 60-70% तक करप्शन कम हो गया है। कारण सारा ही फेसलेस ट्रांजैक्शन होने लगा है। अब फेसलेस ट्रांजैक्शन में मान लिया लखनऊ का बिजनेसमैन है, उसका केस लखनऊ के इनकम टैक्स कमिश्नर के पास नहीं जाना है, उसका केस जाएगा चेन्नई के इनकम टैक्स कमिश्नर के पास। और चेन्नई वाले को यह नहीं पता कि ये कहां से आया है, उसका नंबर लिखा होगा। लखनऊ वाले को यह नहीं पता कि उसका केस कहां गया है। अगर उसकी एज सच कोई क्वेरी होगी तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो बात करेगा और जो रिकॉर्डिंग होगी, समझ गए। तो वैसे भी उस जगह पे करप्शन बहुत कम हो गया है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का रोल बहुत बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे कंट्री के अंदर आपको करप्शन कम दिखेगा। सरकार को मेन प्रॉब्लम, और कंट्री के अंदर वैसे भी अगर करप्शन होता है तो मैं आपको बता दूं, सरकार के लिए ये बाएं हाथ का काम है पता लगा लेना कि अगर किसी ने करप्शन किया है, सरकार के लिए बहुत मुश्किल काम नहीं है। आप अगर पैसा बना भी कोई लेंगे या कोई अगर पैसा बना भी लेता है तो तुम खर्च नहीं कर पाओगे, बात क्लियर। वो इम्पॉसिबल हो जाएगा तुम्हारे लिए खर्च करना, तुमको हर समय जेब में कैश लेके घूमना पड़ेगा। अगर सरकार तुम्हारे पीछे पड़ गई है और तुमने प्रॉपर्टी बनाया है तो सरकार के लिए लिटरली ये बाएं हाथ का खेल है कि जिसमें बच ही नहीं सकता है सामने वाला बंदा। आप कहेंगे सर इतने लोगों ने करप्शन करके पैसा बनाया है, वो अभी तक फंसे क्यों नहीं? अभी तक सरकार ने उनको छोड़ दिया है, बस इतना ही किया है सरकार ने। इसका ये मतलब नहीं कि वो स्मार्ट हैं, सरकार ने उनको छोड़ दिया है। ये उसी तरीके से है कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो कई बार आप नोटिस करते होंगे कि नुक्कड़ चौराहे पे सिगरेट पीते हुए उसके घर वालों ने मान लिया देख लिया किसी रिलेटिव ने, वो रिलेटिव खुद ही मुंह घुमा के चल देता है। कुछ तो ऐसे होते हैं कि एकदम सामने आके खड़े हो जाते हैं, अच्छा। लेकिन जो सबसे समझदार और बेचारा पढ़ा लिखा आदमी होगा वो देखेगा और एक बार गर्दन घुमा के चला जाएगा, ऐसे कि जैसे देखा ही नहीं। जरूरी नहीं है कि उसको एम्बेरस किया जाए। तो उसी तरीके से है कि अगर सरकार ने आपको देख लिया है करप्शन करते हुए तो सरकार नॉर्मली गर्दन घुमा के चली जाती है। अदरवाइज कंट्री के अंदर तो सरकार से कोई क्या ही बच पाएगा। आप कहेंगे कि किसी भाई के नाम पर मैं प्रॉपर्टी खरीद लूं, बहन के नाम पे प्रॉपर्टी खरीद लूं, जब सरकार उल्टा टांग के और नीचे स्टोव जलाती है ना, तो भाई, आपका भाई हो चाहे कोई भी हो, जो प्रॉपर्टी उसके नाम आपने नहीं किया है उसमें भी आपका नाम डाल देगा वो, कि सारा इनका ही है, मेरा इसमें कहीं कुछ नहीं है। और इसलिए सरकार कंट्री के अंदर की चीजों से उनको बहुत दिक्कत नहीं है। दिक्कत यह है कि जब आप शातिर बनने की कोशिश करते हैं और कंट्री के अंदर जब पैसा आता है राउंड ट्रिपिंग करके, उससे उनको प्रॉब्लम है। जब पैसा पूरा वर्ल्ड घूम के आता है, कैसे घूम के आता है वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है, थोड़ा अभी समझ लीजिए, बाकी चीजें तो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग और ऑर्गेनाइज क्राइम के बीच में बड़ा क्लोज रिलेशनशिप होता है। आगे पढ़ेंगे ऑर्गेनाइज क्राइम के बारे में कि ऑर्गेनाइज क्राइम का एक ही मकसद होता है, पैसा बनाना। प्रॉफिट ओरिएंटेड ही इनका काम होता है, ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाना, बस इकलौता इनका पर्पस होता है। वो पैसा बना के लेकिन तुम करोगे क्या? मान लिया सैकड़ों करोड़ रुपया तुम्हारे पास है, सैकड़ों करोड़ रुपया कहां यूज करोगे? उसको वाइट अपीयरेंस तो देना होगा ना, जिससे तुम उसका पर्सनल कंजम्पशन में यूज कर सको, पहला। या मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के बीच में क्लोज रिलेशनशिप है। आज के समय में टेरर फाइनेंसिंग इज मेनली बीइंग डन थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू ही आज के समय में टेरर फाइनेंसिंग का काम किया जाता है।
अलग अलग तरीकों से, जैसे आज के समय में बिटकॉइन के थ्रू भी होने लगा है, हालांकि थोड़े समय के बाद होगा नहीं, ये सारा कुछ रेगुलेट होना है। अभी ऑलरेडी इस पर बात चलनी शुरू हो गई है और इस पर बहुत स्ट्रांग रेगुलेशन आने वाला है और अक्रॉस द वर्ल्ड में आने वाला है, क्योंकि कोई भी सॉवरन इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है कि कोई ऑल्टरनेट करेंसी आए। कोई सेंट्रल बैंक दुनिया की इस चीज के लिए रेडी नहीं है। तो इसलिए आगे आने वाले टाइम में आप ये नोटिस कीजिएगा कि बहुत स्ट्रांग रेगुलेशन आना है, चाहे वो यूरोप हो चाहे वो अमेरिका हो। और चाइनीज ने तो ऐसे भी बैन कर दिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बैन करने के मूड में है। सारा ही टेरर फाइनेंसिंग आज के डेट में बिटकॉइन के थ्रू हो रहा है। कोई रिकॉर्ड मिल ही नहीं रहा है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट उसमें करेगी क्या? केवल एक एड्रेस होता है और किसी के अकाउंट में पैसा गया और वो वहां से पैसा ट्रांसफर कर लेता है अपने अकाउंट में। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कोई भी गवर्नमेंट इसको रेगुलेट ही नहीं कर पाती है। अभी तक रेगुलेशन कैसे चलता है? स्विफ्ट सिस्टम के से जो भी ट्रांजैक्शन होता है उस पर अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज की नजर होती है या वर्ल्ड के इंटेलिजेंस एजेंसीज की नजर होती है। बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन में उनकी नजर होती ही नहीं है। आईएमएफ का कहना है कि हर साल लगभग $5 बिलियन का मनी लॉन्ड्रिंग होता है। तो मनी लॉन्ड्रिंग का मेनली प्रोसेस क्या होता है? 3 प्रोसेस होता है या 3 स्टेज में प्रोसेस है। प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन मनी लॉन्ड्रिंग। 1, प्लेसमेंट। सेकंड, लेयरिंग। थर्ड, इंटीग्रेशन। which again involves 2 stages. 1, justification. एंड फाइनली इन्वेस्टमेंट, जो फाइनली आप पैसे को वाइट बना चुके हैं। ये अलग अलग स्टेज होता है। अब जरा एक वो पीरियड याद कीजिए डीमोनेटाइजेशन वाला। डीमोनेटाइजेशन में किसी के पास पैसा कहीं से भी आया हो, कोई भी पैसा हो, अल्टीमेटली उस पैसे को बैंक में जाना था। समझ गए? मान लिया मेरे पास 10 करोड़ रुपया पुराना वाला नोट पड़ा हुआ होता डीमोनेटाइजेशन में, तो पैसा तो मेरे लिए रद्दी है, किसी काम का है नहीं अगर वो बैंक में नहीं गया तो। मैंने किसी आदमी को अप्रोच किया, उस आदमी ने कहा कि ठीक है 10% मुझे दे दो, बाकी तुमको 9 करोड़ रुपया मैं दे दूंगा नए वाले करेंसी का, लेकिन वो आदमी के लिए भी वो रद्दी है। उस आदमी को अल्टीमेटली उस पैसे को बैंक में तो ले ही जाना है। तो जब तक वो पुराना वाला पैसा बैंक के बाहर है तब तक वो रद्दी है। उस पैसे को अगर आपको लीगल टेंडर में कन्वर्ट करना है तो आपको उसको बैंकिंग सिस्टम का हिस्सा तो बनाना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। इसके अलावा किसी के पास और कोई उपाय है क्या? है तो बता दीजिए। अगर किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा हो कि इसके अलावा भी कोई उपाय था तो मुझे बता दीजिए। है किसी के दिमाग में? हो सकता है चल रहा हो, यू नेवर नो। तो पैसा अल्टीमेटली तो बैंक में जाना है, ये तो सबको क्लियर है ना कि पैसा किसी ने किसी से लिया हो, वो पुराना वाला करेंसी किसी काम का नहीं है, उसको अल्टीमेटली तो जाना बैंक में ही है। चाहे ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया, जिसने जिसको वो पैसा दिया हो उसका कोई मतलब नहीं है। अल्टीमेटली उस पैसे ने जाना बैंक में है, अगर उस पैसे को लीगल टेंडर बनना है तो। उसी तरीके से अगर आपको मनी लॉन्ड्रिंग करना है तो इस पैसे को एक बारी तो फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट बनना ही होगा। समझ गए? जैसे डीमोनेटाइजेशन में किसी ने किसी को पैसा दिया हो, ये इममटेरियल पैसे को अल्टीमेटली एक बारी तो बैंक में जाना है, अगर वो पुराना वाला नोट है तो ही ये माना जाएगा कि मान लिया वो 10 करोड़ 100 करोड़ 1000 करोड़ जो भी नोट रहा हो, वो पैसा अगर बैंक में नहीं गया और बैंक के बाहर है तो वो पैसा रद्दी की तरफ से है, उसकी उतनी ही कीमत है जितनी रद्दी की कीमत।
पैसा वो बैंक में जाएगा तो ही कुछ पॉसिबल है कि हो पाएगा। उसी तरीके से यहां पर पैसा अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में नहीं गया है तो यह पैसा किसी काम का नहीं है। यह पैसा उस प्रोसेस का हिस्सा होगा ही नहीं कि जहां वो इन्वेस्टमेंट वाले लेवल पर पहुंचे, जहां आप पैसे को पर्सनल कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल कर सके। उस पैसे को तो बनना ही है, अगर व्हाइट बनना है तो उस पैसे को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में एक बार ही तो जाना ही जाना है, चाहे वो जैसे जाए, हिंदुस्तान के बाहर जाए, चाहे जहां जाना हो जाए। आप ये मेरे से बात कह सकते हैं कि मान लिया किसी ने पैसा बनाया हिंदुस्तान में, तो आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि नहीं बाहर क्यों ले जाना है, नोएडा में फ्लैट खरीद लूंगा ना। आप जहां से सोचना बंद कर देते हैं, सरकार उसके 200-400-500 किलोमीटर आगे से शुरू करती है, और कंट्री के अंदर आप नोएडा में फ्लैट खरीद लेंगे या मान लिया जमीन खरीद लेंगे आप अलीगंज में, और पेपर पे दिखाएंगे 10 लाख का जमीन है और आपने जमीन खरीदा है 20 करोड़ का। आपको जो करना है कर लीजिए, सरकार आपके पीछे पड़ गई है तो वो जमीन अगर सरकार ने लेना है तो ले ही लेगी। एक आईएएस ऑफिसर के बंगलों को गवर्नमेंट ने स्कूल बना दिया। ऐसे केसेस कितनी बारी हो चुका है। तुम चिल्लाते रहो कि ये मेरा है, मैंने अपनी मेहनत से बनाया। तुमने जहां से बनाया हो, अगर तुम ये लिख के दे नहीं पाओगे सरकार को कि कहां से आया है, सरकार उस प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट करके और उसको कुछ भी बना सकती है, शेल्टर होम बना सकती है, स्कूल बना सकती है, जो भी बनाना है सरकार को, म्यूजियम बना दे, सरकार उसको कन्फिस्केट कर सकती है उस प्रॉपर्टी को। सरकार के पास ये राइट है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो पहला स्टेज है कि पैसा अगर आपने बनाया है तो उसको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का पार्ट बनना है। अभी आपके दिमाग में ये भी बात आएगा कि सर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मान लिया कंट्री के बाहर पार्ट बन गया तो क्या सरकार पकड़ लेगी मनी लॉन्ड्रिंग अगर किसी ने किया हुआ है तो? देखिए, अगर शातिर खिलाड़ी होगा तो सरकार कभी नहीं पकड़ पाएगी कि पैसा किसने लॉन्डर किया है। कैसे नहीं पकड़ पाएगी ये हम लोग कल डिस्कस करेंगे। 50-50 कंट्री इन्वॉल्व होता है पैसे के ट्रांजैक्शन में, 50, 60, 70, 100 इस टाइप से कंट्री इन्वॉल्व होता है। मतलब 25-30 साल तो ये प्रूव करने में तुमको लगेगा कि पैसा करप्शन का था, और देख के लग रहा है कि हाँ करप्शन का पैसा है, लेकिन बस देख के ही लग रहा है, प्रूव कुछ नहीं होना है। तो कल हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।